अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अकील अब्बासी, आप सब दोस्तों की भाइयों की खिदमत में हाज़िर हूँ न्यू आइडियाज़ लेके, न्यू प्रोडक्शन के बारे में मालूमात लेके, मार्केट में वर्क करने के लिहाज से। ठीक है, आपको सेटअप लगाना है, न्यू प्रोडक्ट तैयार करनी है, किस तरह तैयार करनी है, ट्रेनिंग चाहिए, आप हमारे पास चक्कर लगा सकते हैं। जो हजरात मार्केट में काम कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से हमारे साथ मशवरा कर सकते हैं, अच्छी मालूमात देंगे इंशाल्लाह ताला। पैकिंग वगैरह कहाँ से मिलनी है, ये देखें इस तरह की पैकिंग, ये केबल को लगाने के लिए काशन वाली आपकी ब्रांड की केबल आप इस पैकिंग में। जी मैं आपको बता रहा था कि डाटा केबल के शोबे में बहुत से ऐसे राज हैं जो आपके पास जैसे ही आप मार्केट में जाते हैं तो राज खुलना शुरू हो जाते हैं। तो बाहर बैठ के जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक ये राजों का आपको नहीं पता लगना। ठीक है, लिहाजा आपको मार्केट में एक एक दुकान पे जाके उनके साथ गपशप करें, मार्केट को समझें कि मार्केट चाहती क्या है। मार्केट आपसे सिर्फ और सिर्फ चाहती है कि किसी तरह ये बंदा मुझे बचत दे के चला जाए, किसी तरह ये मुझे बंदा मुझे ये कहे कि ये मैं आपको बड़ा सस्ते में दे रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ें आपको मार्केट को समझाना पड़ेंगी। ठीक है, उन्हें बताना पड़ेगा कि मैं आपको मार्केट से बहुत अच्छा रेट दे रहा हूँ। रेट तो वही आपने देना है, लेकिन उनको एक हिम्मत देनी है कि भी मैं आपको बड़ा अच्छा रेट दे रहा हूँ, मार्केट से हट के रेट दे रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ खुशहाल हो जाए, एक छोटे से बिजनेस में 1 लाख रुपया लगा के 45,000 की मशीन है, कुटाइए, कोई कटर वगैरह, कोई दाना, कोई ये वो हर चीज़ मिला के तकरीबन 1 लाख रुपया आपका खर्चा आएगा और आपको इंशाल्लाह ताला बहुत ही अच्छी और मुनासिब रोज़गार मिल जाएगा जिससे आप मार्केट में वर्क कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से अर्निंग करेंगे। ये आपको कोई इंशाल्लाह ताला बातें नहीं मैं सुनाना चाह रहा, मैं आपको वर्क में लाना चाह रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि वर्क में जो है ना अर्निंग बहुत अच्छी है। ठीक है, अब एक बंदा जिसने मशीन ली है और 6 महीने बाद मुझे कह रहा है कि भाईजान मुझसे काम नहीं हो रहा, तो ये उस बंदे की सुस्ती है। वो बंदा अपने आप को 1 मिनट में कैश करना चाह रहा है, तो लिहाजा 1 मिनट में कैश बंदा नहीं होगा। एक केबल पे 1 घंटा पहले लग जाएगा, दूसरी केबल पे 15 मिनट लगेंगे, तीसरी केबल पे 5 मिनट लगेंगे और जिस तरह ही फिर केबलें तैयार होती जाएंगी 1 मिनट में 2 केबलें तैयार होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, बात को मेरी समझें ताकि आपकी समझ में आए और काम स्टार्ट हो जाए। ठीक है, टांका लगाना थोड़ा सा मुश्किल है इस काम में, बाकी कोई काम मुश्किल नहीं है। मार्केट में जाएंगे, एंजॉय करेंगे, मार्केट में रंग बिरंगे बंदे मिलने हैं, रंग बिरंगे दुकानदार। कोई आपको कहेगा भाईजान इधर बैठे हैं आपके लिए चाय बोतल लाएं, तो कोई कहेगा जी मैं बहुत बड़ा अफसर हूँ और आप लोग एक छोटे से सेल्समैन, कुछ कुछ ऐसे भी कहेंगे। तो मार्केट में रंग बिरंगी दुनिया है जो आपको आहिस्ता आहिस्ता वक्तन फवक्तन आपको एहसास दिलाते रहेंगे कि आप किस तरह के तरीके इस्तेमाल करें। केबल कॉइल का मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये डबल कॉइल है जो बहुत अच्छे रेटों में हमारे पास दस्तयाब है। जितनी क्वांटिटी में कहेंगे, ब्लैक में कहेंगे, वाइट में कहेंगे, जिस तरह का कॉइल कहते हैं आप, आपने अपनी फैक्ट्री लगाई हुई है, हाई लेवल पे फैक्ट्री है आपकी, जितना मटेरियल कहेंगे होलसेल हेड होलसेल रेट पे देने के लिए तैयार हैं हम। ठीक है, पिने वगैरह जिस तरह की आप कहेंगे, केबल कॉइल का मटेरियल जिस तरह का आप कहेंगे हमारे पास मौजूद है। ठीक है, हमारे पास हीटर बॉक्स वगैरह जो भी आप कहेंगे, पैकिंग मटेरियल हर चीज़ तैयार मौजूद होती है हमारे पास। आप हमसे रब्ता करें, हमें कुछ बताएं कि भी हमें ये चीज़ की ज़रूरत है, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। लिहाजा हम आते हैं कि भी मार्केट में खुशहाल कैसे होना है। अगर आप चाहते हैं कि खुशहाल हो जाएं, ठीक है, तो सबसे पहले आपको सादा होना पड़ेगा। मार्केट में जाएं, एक पानी की बोतल साथ रखें। ठीक है, जहाँ पे प्यास लगे पानी पिए। ठीक है, ताकि आपको 100, 50, 100, 200 लगाने की ज़रूरत ना पेश आए। घर से पानी साथ एक बोतल लेके निकलें,
बाइक की हैंडल वगैरह पे बांध के, तो इंशाल्लाह मार्केट में मज़ा आएगा। ठीक है, कम सोचें। अपने इर्द गिर्द जो लोग होते हैं ना, आपको कहेंगे कि यार तू की काम शुरू करता मार्केट ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੈਲਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਤੇਰੇ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੁਦ ਕਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਘੱਟ ਦਿਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਕ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਦਾ ਲਾਈਫ ਗੁਜ਼ਾਰੋਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋਗੇ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਘਟਾ ਦਿਓ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ 2000 ਦਾ ਸੇਲ ਹੈ ਤੇ 2000 ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੰਟਰ ਕਰ ਦਿਓ। 10,000 ਸੇਲ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ 200-400 ਆਪਣਾ ਖਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇਨਵੈਸਟ ਇੱਕ ਹੀ ਦਫਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਸੇਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਾਲ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇਬ 'ਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਮਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਖਰਚਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1-2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਿਰਫ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ। ਜਨਾਬ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਲ ਆ ਜਾ ਬੋਤਲ ਪਿਆ ਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਇਹ ਖਰਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ 10 ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਲਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚਾ ਕਰੋ। ਅਦਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਈਕ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਡਲਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਤੋਂ 30,000 ਰੁਪਇਆ, 50,000 ਰੁਪਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਬਲ ਲੈ ਲਓ 10,000 20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਤਨੇ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਸੇਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। ਮਸ਼ੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰੋ। ਮਸ਼ੀਨ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਖਰਚਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੋਸਤ ਬਾਪ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨया ਸੂਟ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ 10,000 ਜਾਂ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਡੇਲੀ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓ।
لاہور یا ادھر ادھر ਸਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਹਫਤੇ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਕਸਰ ਔਕਾਤ, ਬੁੱਧ ਤੇ ਜੁਮੇਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਕੋਲ, ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਸੇਲ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਬੁੱਧ ਤੇ ਜੁਮੇਰਾਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਪੂਰੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੂਬ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਖੂਬ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹੀ ਮੈਂ ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात है कि पैसे अपने हक के खाओ, किसी से लेकर ना खाओ। जो पैसे आपकी जेब में है ना जी, जो पैसे आपकी जेब में है सिर्फ वही आपके हैं। जब आप किसी के पास जाके किसी को कहते हो यार मुझे 10,000 रुपये की या 2,000 रुपये की बहुत ज़रूरत है या 1,000 रुपये की बहुत ज़रूरत है, वो पैसे आपके ऊपर कर्जा चढ़ जाता है और वो पैसे आपको बढ़ने नहीं देते, ठीक है, वो आपको आगे काम करने नहीं देते, क्योंकि आपने जब पैसे इधर से पकड़े हैं, इधर खर्च कर लिए हैं और जाके अगले दिन कमाओगे, वो कमाई आपने उधर दे देनी है। अब आप फिर खाली हैं, अब आप फिर सोचोगे तो ये आपकी चैन चलने लग जाएगी। लिहाजा आपका हक वो है जो आपकी जेब में है, जो आपने खुद मेहनत से कमाए हैं। किसी से लेके जब आप उसे 7 दिन या 10 दिन का टाइम देते हैं तो वो आपको 10 दिन के बाद मिलता है, तो आप फिर आपके पास मायूसी होती है कि भी जनाब अगर ये मैं इसे दे दूंगा तो मैं क्या करूंगा। तो लिहाजा अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल में रखें। कंट्रोल में रखेंगे तो मेरा भाई आप किसी का हक नहीं खाएंगे, तो आपकी जो जोश है ना काम करने का वो भी डबल रहेगा। ना तो आप किसी से भागेंगे, ना तो आप किसी की तरफ देख के छुपेंगे, ना किसी को आप हर किसी से खुश मिजाज मिलेंगे, उसके साथ उसको भी जाके कहेंगे यार मैं ये काम शुरू कर रहा हूँ या कर चुका हूँ, तो उसे भी कल को अगर एक केबल की जरूरत हुई तो वो 100 रुपए की आपसे परचेज करेगा। केबल आपकी तैयार होगी 17 रुपए में, 17 रुपए में आपकी प्रोडक्ट सेल होगी। और मार्केट में यही रेगुलर केबल अगर आपने अच्छी डाई में बनाई है तो 85 तक आपकी सेल होगी, ठीक है। मार्केट सिर्फ केबल देखती है, मार्केट म्यार बहुत कम देखती है, ठीक है। और जो लोग म्यार देखते हैं वो आपसे केबल चेक करके तसल्ली करके लेंगे, और आपसे वो प्रोडक्ट आपकी अगर 17 रुपए में या 30 रुपए में भी तैयार हुई है ना, अगर अच्छी चीज़ तैयार आपने कर ली है 30 रुपए में तैयार हुई है, तो वो आपसे 90 रुपए क्या 110 रुपए में भी वो चीज़ लेंगे, ठीक है। अब आप खुद ही देख लें कि आपकी प्रोडक्ट में कितना प्रॉफिट है, और आप 100 पीस मार्केट में सेल कर दें, ठीक है। दुकानदार को किसी को 10 चाहिए, किसी को 5 चाहिए, किसी को 20 चाहिए, आप इन्हें मार्केट में सेल करके आए, आपको देखे मज़ा आ जाएगा। एक ही दिन में आप कहेंगे कि यार मैं 100 पीस सेल करके 30 रुपये पर पीस, यानी कि 30 रुपये की चीज़ तैयार हुई है, 30 रुपये उससे प्रॉफिट लेके आप आ जाएं, आपको पता लग जाएगा आपने मार्केट से क्या कमाया। लिहाजा ये 100 पीस बहुत मामूली बात कर रहा हूँ कि 1 या 2 दुकानदारों के पास इतनी क्वांटिटी जाती है। आपने कोई 10 या 15 दुकानदार सारा दिन में कर लिए, इंशाल्लाह ताला आप खुद आके कहेंगे कि मेरी 10,000 रुपये की अर्निंग एक दिन की होनी शुरू हो गई है। मेरा भाई ये मामूली बात है, मामूली, ठीक है। मार्केट में जाएं, ये कतरे कतरे से दरिया बनता है। आप मेरी बातों को जो ना सीरियस लेने की कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको अजर देगा। सोचने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ज्यादा सोचने में आप मायूस हो जाएंगे। अगर आपको 2 महीने या 4 महीने हो गए हैं, आप यही सोच रहे हैं कि जी मैं अब काम शुरू करता हूँ या मैं अब काम शुरू करता हूँ, और भाईजान ये कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो खराब हो जाए। और सबसे अहम बात, जब आप काम करना शुरू कर देंगे तो लोग आपकी तरफ तवज्जो देना शुरू करेंगे। कैसे तवज्जो देंगे? वो आपको जनाब देखेंगे लड़का काम कर रहा है जनाब, तो आपसे जब आप लेने जाओगे, उनसे उधार लेने जाओगे या वो दे भी देते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट है, लेकिन आप उनसे लो ना, कोशिश करो उनसे पैसे लो ही ना। लेकिन जब आप काम करना शुरू कर दोगे तो वो
آپ کی طرف توجہ دینا شروع کر دیں گے. اگر ان کی جیب میں ہوں گے بھی تو وہ آپ سے کہیں گے یار مجھے 2000 کا ادھارا تو دیں. تو لہٰذا دہاڑی میں آپ کو 10 بندے ایسے نہیں ہیں جنہوں نے ادھار ہی مانگنا ہے آپ سے. ٹھیک ہے, تو ایسے لوگوں سے بھی پرہیز کریں. ٹھیک ہے, زندگی کے اندر جو آپ کے پاس نہیں ہے چیز, ٹھیک ہے, اس کا غم نہیں کرنا آپ نے, لیکن جو آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو ملنا ہی نہیں گا. تو لہٰذا انکار کرنا سیکھیں. اگر کوئی بندہ آپ سے کوئی چیز لینے آتا ہے تو اگر آپ کے پاس ہے یا آپ کو اس کی ضرورت ہے یا ضرورت نہیں ہے تو اسے ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ کہہ دیں کہ بھائی یہ میں آپ کو نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے, اگر فی الحال پیسے ہی مانگ رہا ہے تو اگر آپ کے پاس ہیں تو اسے دے دیں, اگر نہیں ہے تو فوری اسے کہہ دیں. یہ نہ کہیں میں صبح دوں گا, میں کل دوں گا یا پرسوں دوں گا یا میرے پاس 1-2 دن بعد آ جائیں. تو یہ وہ بندہ آپ سے باغی ہو جاتا ہے, آپ سے دور بھاگنا شروع کر دیتا ہے, آپ کو وہ 10 لوگوں کے آگے بدنام کرتا ہے کہ یار وہ مجھے گیڑے پہ گیڑا ہے. اس کے ساتھ آپ کا تعلق خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا تعلق خراب نہیں کرنا کسی کے ساتھ. اگر آپ کے پاس پیسے ہیں کسی کو ادھار دینے کے لیے تو دے دیں. اگر کسی کا آپ کوئی کام کے سلسلے میں آپ کے پاس آیا ہے تو آپ وہ کر سکتے ہیں تو کر دیں. کسی کو گیڑے میں نہ رکھیں, اس چکر میں نہ رکھیں کہ جناب میں آپ کو کل دے دوں گا, شام کو دے دوں گا, پرسوں دے دوں گا. یہ چیزیں آپ کے لیے نقصان دہ ہیں. لہٰذا اپنے آپ کو فٹ کریں. معاشی لحاظ سے ارننگ مارکیٹ میں تب بھی ہونی ہے جب آپ نے مارکیٹ کرنی ہے, جب کوئی کام جوش و جذبے کے ساتھ کرنا ہے. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کچھ بھی نہیں کرنے کا سوچتے, صرف جی ہم آئے ہیں, ہمارے پاس 2 بھائی ہیں یا میرا ایک بیٹا بیٹھا ہوا ہے وہ کام کرے گا. تو لہٰذا وہ جن کے لیے سیٹ اپ لگاتے ہیں وہ کام شام کوئی نہیں کرتے, سیٹ اپ لگے کے لگے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, لہٰذا خود اگر وہ کام نہیں کر رہے انہیں آپ تنخواہ پہ رکھ لیں, انہیں آپ ڈیلی خرچے پہ رکھ لیں. ڈیلی جب کوئی کام شام کر کے ہٹیں 200-400-300 یا جتنا بھی ٹھیکہ ان سے مکائیں انہیں دے دیں اور انہیں کہیں ڈیلی ارننگ پہ کام کروائیں, ڈیلی انہیں پیسے دیں تاکہ انہیں اگلے دن پتہ ہو کہ ہم جائیں گے تو ہمیں پیسے ملنے ہیں, اگر ہم نہیں جائیں گے تو ہمیں نہیں ملنے. لہٰذا مہینے پہ کم رکھیں بندوں کو, مہینے پہ تنخواہ پہ کم لوگوں کو رکھیں, ڈیلی بیس پہ رکھیں تاکہ انہیں پتہ ہو کہ 200-400-500 ہمیں ملنا ہے. ہم آج جائیں گے تو ہمیں پیسے ملنے ہیں, نہیں جائیں گے تو نہیں ملنے. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو ورکنگ میں لے آئیں. انویسٹر حضرات اس طرح اپنے آپ کو کام کریں, انشاءاللہ تعالیٰ بہترین ورک میں آئیں گے. ارننگ بہت اچھی ہے, محنت کرنے کی تھوڑی سی ضرورت ہے, جوش و جذبے کے ساتھ کام ہونا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ رونق لگ جانی ہے. ایک مشین 1 مہینے میں پیسے نہ پورے کرے, میں ذمہ دار ہوں. محنت آپ نے کرنی ہے, میرے طریقے سے کر لیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اچھی ارننگ ملے گی. دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے ایک اچھی بات کے ساتھ, اچھے جوش و جذبے کے ساتھ. السلام علیکم.